हमारे साथ में जुड़ी, उनको जब मैंने देखा कि सबने एक डिसाइड किया कि हम इसको मिल के और एक साथ जुड़ के निर्मल जी का साथ देना है, एक्मे फिनट्रेड का साथ देना है और इस चीज को हमें एक अगले लेवल तक लेके जाना है, तब मैंने जाके कहीं ये फैसला लिया जो आसान नहीं था कि मुझे फिनट्रेड के साथ जुड़ना है और इसके ट्रांजिशन जर्नी में अपना एक सहयोग देना है टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। जिस दिन से मैंने डिसीजन लिया है, I can tell you that मुझे कोई regret नहीं, I have no regrets, absolutely no regrets of being part of this transition. We are now building this company from a closely held to a public limited company, a listed company, subject to necessary approvals. So we are waiting for all those approvals which are expected to come in the next few days and weeks to come. जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको अगले कुछ समय में बताने वाला हूँ कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं और हमारी जर्नी कैसे रहने वाली है, जो लार्जली दो भागों में होगा। एक, अब तक फिनट्रेड क्या रही है और आगे चल के हम जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह हम लेके जाने वाले हैं हमारे न्यू रिलेशनशिप में, जिसको हम एक बैंकिंग रिलेशनशिप भी कह सकते हैं और एक कस्टमर रिलेशनशिप कह सकते हैं। बैंकिंग वो जो हमें पैसा देते हैं, हमें लेंड करते हैं ताकि हम उसको आगे हमारे कस्टमर्स को लेंड कर सकें और उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। प्लीज अलाउ मी फ्यू मिनट्स, मैं आपको इस जर्नी के दरमियान कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूंगा जो हमारे लिए और आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। बट मैं आपको बता दूं, जो निर्मल जी यहाँ पे एज अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, एक छोटे से शहर जिसको उदयपुर कहते हैं, जहां से उन्होंने शुरू किया, एंड it really surprises me that how Nirmali would have achieved what he's already achieved, in last 25 years. आप एक इमेजिन करिए कि करीब 100 बैंकों के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाना और उनमें से करीब 33 इंस्टीट्यूशंस के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करना, एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना जो हमें सपोर्ट करे, हमारे पैसे को सपोर्ट, हमें पैसे से सपोर्ट करे जो कि हम आगे कस्टमर, तो करीब इन 33 लेंडर्स ने मिलकर हमें 600 करोड़ से नवाजा है, जिसकी वजह से हम आगे लोगों को लोन और उनके सपने पूरे कर सके। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये कई बड़ी बैलेंस शीट्स पे आपको 33 रिलेशनशिप नहीं मिलेंगे जो आज आपको देखने मिलेंगे एक छोटी सी बैलेंस शीट के अंदर, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा माइलस्टोन है। पिछले 25 साल में कई उतार चढ़ाव आए, कई समय ऐसे आए जब ऐसा लगता है कि बस अब हम एक आगे दीवार है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, बट कहीं ना कहीं से रास्ते निकल जाते हैं और रास्ते तभी निकलते हैं जब हमारी नीयत साफ होती है। निर्मल जी के बारे में हमने एक चीज जो जाना है कि उनकी नीयत जो है वो कभी भी ये नहीं रहता है कि अगर पैसा कहीं से कम हो जाए, तो ये कहते हैं पैसा पूरा देंगे, थोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन हम जो है पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं, कभी हमने ये नहीं कहा कि कर्ज कम कर दो। कोशिश ये रहती है कि हम किस तरीके से हर एक रिलेशनशिप को आगे लेके जाए और किस तरीके से आगे बढ़े। ये हमारे लिए जब हम आसान लोन शुरू करना चाहते हैं, ये एक बहुत बढ़िया स्टार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी आप अगर देखें तो हमारे लिए ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है जहाँ पे 30+ रिलेशनशिप्स है, जहाँ पे ऑलरेडी 600 करोड़ का हमने डेट रेज किया था, उसमें से करीब 400 करोड़ के ऊपर चुका दिया है, जो लोगों को वापस भी दे दिया है, बैंकों को जो हमने पैसा लिया था, और उस लोन को जो हमने आगे लोन दिया था, लेंड किया था, वो हमें उसी तरह से इंटरेस्ट रिटर्न करना है और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम आसान लोन की बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जब हम आगे बढ़ते हैं। और जो काइंड ऑफ नंबर्स हम बात कर रहे हैं, ये अगर आज हम एक स्टार्टअप करें उसके माध्यम से देखें तो हम ऑलरेडी एक पेडेस्टल पे है जहां से हमको सिर्फ आगे बढ़ना है। तो इस आसान लोन के नए अवतार में जब हम आगे चलना चाहते हैं तो हमने सोचा कि अब 25 साल की जो जर्नी हमने यहाँ तक ली है वो तो एक माध्यम से हमने पूरी की है, बट आगे का जो हम समय और आगे का जो एक सफर तय करने वाले हैं, उस सफर में हमें जो ब्रांचेस हैं, ना कि खाली ब्रांच लेवल पे जाना है, जिसको हम कहेंगे कि एक डिजिटल मॉडल में हम जाना चाहते हैं, जिसमें एक फिजिकल ब्रांच भी होगी और एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा, जिससे हम एक असिस्टेंट माध्यम से जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, जो रूरल मार्केट में जिनको लोन की आवश्यकता है, टिपिकली हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं 2 व्हीलर 3 व्हीलर यूज्ड 4 व्हीलर, महिला उद्योग लोन, छोटे बिजनेस लोन, जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनको कैपिटल के लिए जरूरत पड़ती है, जो बड़े बैंकों के पास नहीं जा सकते, उनके साथ पूरे पेपर्स में हो कुछ तरीके की वजह से, पर उनके पास कोई असेट होता है, घर होता है, जिसके एवज में वो हमसे लोन दे सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वो हमारे यहाँ पे आके धक्के खाए या चक्कर लगाए,
हम चाहते हैं कि हम वहां पे जाके उनके ब्रांच के पास जाके एक असिस्टेड वे से उनको किसी तरह डिजिटल वे से हमारे ऑनबोर्ड करें, उनको लोन प्रदान करें और ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम एक सोशल कॉज की तरफ जाते हैं। जो निर्मल जी का एक सपना था कि हमें अर्बन एरिया में नहीं जाना है, जिनके पास ऑलरेडी पैसे हैं उनको पैसे नहीं देने, हमें वहां जाना है जहाँ पे पैसों की सख्त जरूरत है, जहाँ पे बिजनेस को बढ़ाने के लिए और पैसों के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो उनको पास जाके उनको लोन देने के लिए। ये जो सपना है उसको हम डिजिटल वे से किस तरीके से पूरे करेंगे, अभी हमारे जो नेक्स्ट फेज हमको जो कहते हैं, जो अगला हमारा पड़ाव होगा वो उस तरीके से होगा। इसके पहले हम फिजिकल फाइलिंग करते थे, अब उसको डिजिटल माध्यम से करेंगे, पूरा टैबलेट बेस्ड होगा, ताकि आगे चल के हम जो कस्टमर को ऑनबोर्ड करें वो एक सीमलेसली हमारे सिस्टम में एंटर हो जाए। So, and I'm sure I'll get all the support I need to make this a success. मुझे पता है कि आप सब जो इस कॉल पे मेरे साथ जुड़े हैं, आप सब इस इस कार्य में मेरे साथ जुड़ेंगे। माफ करना, मेरी थोड़ी हिंदी प्लस माइनस होती है, बिकॉज आदत नहीं बार-बार हिंदी में बात करने की, तो थोड़ा सा प्लीज पार्डन मी, बट at the end, I would like to thank all of them, who have been part of my journey, my personal journey in the professional way. All my friends, my mentors, I would like to name a few. Kumar Subramanian, who's been, with me in and out working. Ulas Deshpande, Anil Sachidanand, जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं as a mentor and coach, जिनके guidance के माध्यम से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एक NBFC और एक इतने बड़े स्तर पे काम करना, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत सपोर्ट लगता है, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, तो ये इस माध्यम से हमें सपोर्ट मिलता है। All these bosses who have worked with me, at different levels of my life, have always shown that trust in me, given me that opportunity to lead at various roles. And I think उसकी वजह से ही आज अगर मैं ये जिम्मेदारी संभाल पा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो उसकी वजह से सारे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने सही टाइम पे, कहीं अगर हम गलत कर रहे हैं तो हमको सही राह दिखाई है, तो वो सब साथ में जुड़े हैं, जिनके माध्यम से मेरे प्लस मेरे कॉलीग्स जो मैं पिछले 6 महीने से इनसे जुड़ा हूँ, जिन्होंने पूरी तरह से मुझे सपोर्ट किया। मतलब मैं ये कहूंगा कि एक आउटसाइडर को जैसे होता है ना कि ये बाहर का आया है, उदयपुर में बॉम्बे का कोई आया है, उसको हमें आउटसाइडर ट्रीट न करते हुए हम उसे किस तरीके से अपने साथ लेके चले, एक आगे बढ़ने की अपेक्षा से कि हम कैसे आगे बढ़े। तो निर्मल जी का पूरा सहयोग रहा है, रजनी, रौनक और प्लस जो मेरे टीम मेंबर्स हैं जो कलेक्शंस में, सेल्स में, ब्रांच में काम करते हैं, उन सबका पूरा मुझे सहयोग रहा है, जिसकी वजह से आज हम जहां हैं वहां पहुंच पाए हैं, और आई एम श्योर आगे भी रहेगा, ताकि हम उसको आगे एक नए लेवल पे लेके जा सकें। थैंक यू वेरी मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ऑल योर सपोर्ट एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ऑल। थैंक यू बॉबी, एंड आई थिंक बॉबी की हिंदी के लिए तो तालियां बनती हैं। आप शायद वहां पे तालियां मार रहे होंगे, मुझे सुनाई दे रही है, तो आप तालियां मारते रहिए ताकि हम थोड़ा और हिंदी में बोलते रहे, और जब तक हम निर्मल जी तक पहुंचेंगे तब तक शायद थोड़ी हिंदी सुधर जाएगी। चलते हैं रजनी की कहानी की तरफ। रजनी गेहलोत is the chief financial officer of the company, a woman who makes us all proud by holding numbers together for an organization. एक स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी में, हर रोल के लिए हमारे सामने एक चेहरा आता है, एक जेंडर आता है, और कुछ लोग होते हैं जो इस स्टीरियोटाइप को चैलेंज करते हैं, एंड दैट इज रजनी फॉर यू। सो रजनी कहती है कि तू रख यकीन बस अपने इरादे पर, तू रख यकीन बस अपने इरादे पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं है। और उनका हौसला इतना बुलंद है कि जल्दी शादी होने के बावजूद वो ना सिर्फ एक क्वालिफाइड सीए है, उन्होंने एमकॉम किया है, एमबीए किया है, और अगर अभी थोड़ा बहुत वक्त निकाल पाए तो शायद और भी काफी क्वालिफिकेशंस ऐड कर पाएंगी अपनी क्रेडिबिलिटी पे, जो काफी रिकॉग्नाइज्ड है, और इस कंपनी ने उसको ना ही सिर्फ सराहा है बट काफी वैल्यू भी दी है। रजनी इस कंपनी के साथ 10 साल से जुड़ी हुई है, and for 10 years she's handled the financial leadership role within the company and has knowledge of all aspects of exploring opportunities in the space of finance. She's also involved in software planning and its implementation, and handled all legal aspects and compliance of RBI and treasury management for the company. So please put your hands together to give a very warm welcome to Rajni Gehlot. Thank you. Respected dignitaries, my dear colleagues, my dear friends, I am Rajni Gehlot and I represent the company Akme Fintrade India Limited, Chief Financial Officer.
I'm a qualified chartered accountant and have invested over a decade with Akme Fintrade. I'm delighted to present the company financials here. The company Akme Fintrade India Limited, now with the brand Aasaan loans, 26 years post incorporation. In the last 26 years, the company has delivered financial services to more than 2 lakh customers. Till date, the company has extended advances to more than 1,200 crores, largely to the untapped and unserved customer segments, where there is always a shortage of finance for business in over 100 plus districts, covering 5 states in India. And the highest asset size of the company has reached to more than 500 crores. I'm very happy to state that the company has the support of 33 lenders with a total sanction and disbursement amount of more than 700 crores. At the peak, the company has a leverage of 4.5 times of the net worth. One of the most difficult tasks is having a liability relationship, and that was very well achieved under the leadership of the management agent. The 33 lenders includes public sector banks, private sector banks, large NBFCs, and others. The company has also availed international line of credit from World Business Capital, USA, a foreign institution who has reposed trust and extended a credit of line of $8 million in Akme Fintrade India Limited. We also have the NCD listed on BSE, and as such, we are following all the listing norms. At the peak, the company had a total income of more than 100 crores with a profit after tax of around 19 crores. And we are quite confident that we can do more better with all your support, guidance, and a strong relationship. Thank you to all the stakeholders, growth partners of the company, consultants, management, and employees, and all my colleagues for the continuous support and trust in the company. Thank you. Thank you so much, Rajni. Round of applause. तालियां मारना आपका काम है और कंपनी के बारे में सारी सीक्रेट्स रिवील करना आज हमारा काम है. Right? So let's play our parts. Banking fraternity में एक जोक है कि बैंक्स उन लोगों को पैसे देते हैं जिनको पैसों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने वेरिफिकेशंस रन करते हैं कि जब तक आप वो सब क्लियर कर पाते हैं तब तक आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छी होती है. बट कुछ लोग होते हैं जो इसके बियॉन्ड जाना चाहते हैं, जो उन तक पहुंचना चाहते हैं जिनको कोई नहीं देख रहा, जिनको कोई मदद नहीं कर रहा. और आज अगर हम निर्मल जी जैसे लोगों को नहीं देखे, नहीं समझे, सपोर्ट नहीं करें, तो शायद हम उस लेवल तक टियर 2, 3, 4 जो हमारी कंट्री में है वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए. और वहां तक पहुंचने के लिए एक टीम की जरूरत है, आपकी और इन सब लोगों की जो आज इस इवेंट के साथ जुड़े. आगे चलते हैं रौनक जी के पास, जो हमारे सीएस हैं, एज अ कंपनी सेक्रेटरी. और जब मैंने रौनक जी से सपनों के बारे में बात की तो रौनक ने बोला कि सपने और लक्ष्य के बीच में केवल एक ही अंतर है. सपनों के लिए बिना मेहनत का सोना पड़ता है और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत लगती है. तो जब आप एक लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपको नींद छोड़ देनी पड़ती है. सपनों से उभर के एक्शन मोड में आना जरूरी है. और जब हम एक्शन मोड में आ जाते हैं तो अपने आप क्लैरिटी भी आ जाती है और सपोर्ट भी आ जाता है. और रौनक की कहानी कुछ ऐसी ही है. वो उनमें से एक है जो हर क्वालिफिकेशन को अटेन करना चाहते हैं, इसलिए ताकि वो उस फील्ड को, उस डोमेन को और अच्छे से समझ सके, उस लेवल तक एक्सपर्टीज डेवलप कर सके कि वो एक कंपनी की बैकबोन बन पाए. So as a CS, he is a fellow member of Institute of Company Secretaries of India and has over 10 years of experience as a company secretary and corporate law professional with Akme Fintrade. He is also the chairman of ICSI Udaipur and also mentors at the IIM Incubator Center in Udaipur. He's done his company secretary from ICSI New Delhi. Apart from professional degree, he has completed MCom, MBA and LLB. अगर कुछ रह गया तो वो है PhD जो वो अभी परस्यू कर रहे हैं और काफी जल्दी उसे भी खत्म कर डालेंगे. So please put your hands together to welcome Ronak, who will take us through what's in store for the company and this transformation. Thank you, Yuti. Good evening, everyone. Distinguished guests, colleagues, and all listeners, and all guests who has joined us through this
who has joined this us in this evening. I, Ronak Juthawat, Company Secretary and Corporate Law Advisor of the company, would like to take opportunity to give you a quick overview of the compliances and corporate governance of the company in last 10 years. I have been working with this company since 2013, and in fact, I have started my career with this Akme group of companies only. The secretarial team is always responsible for the company's corporate governance, compliances, and applicable laws and regulatory compliances. In the interest of the regulatory body and stakeholders, we always ensure corporate governance with the highest level of compliances. Permit me to describe the company's journey. Akme Fintrade India Limited was founded by Mr. Nirmal Kumar Jain, chairman of the company, Mr. Banshilalji Jain, Mr. Kalulalji Jain, late Mr. Shri Mohanlal Nagda, and Mr. Anil Kumar Jain in 1996. After 26 years, I can say this is a milestone for this Akme Group. इतना लंबा समय होने के बावजूद भी हम आज उसी गोल के साथ में हम काम कर रहे हैं. What was the goal? Goal was to serve the poor people in the society in the rural areas with the financial facility. Sir has seen a dream कि हमारे सोसाइटी के जो लोग जिन्हें वीकर सेक्शन के वो लोग जिन्हें फाइनेंशियल लोन मिलने में बैंकों से मिलने में बहुत दिक्कत आती है, उन्हें क्यों ना हम अपने तरीके से फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करें, एनबीएफसी को एस्टैब्लिश करके वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें ताकि उनको भी उनके सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट का एक मौका मिले, अपने परिवार को ऊपर उठाने का एक मौका मिले. इसी एम के साथ इस कंपनी की स्थापना की गई. छोटे छोटे लोन से आज हम एसएमई बिजनेस लोन की तरफ अग्रसर हुए हैं और उदयपुर के रूरल एरिया से स्टार्ट करके आज कंट्री के 5 स्टेट्स में मोर देन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग ये काम कर रहे हैं. एज एन कंपनी सेक्रेटरी कंप्लायंस की अगर हम बात करें 2013 after 20 years almost, board has decided to onboard the professionals team to add this journey of the company. So company secretaries, chartered accountants, MBAs has been onboarded in 2013, and from onwards we always ensured to maximum compliances with the good corporate governance. एक सेक्रेटरी टीम की हमेशा से ये एक सेक्रेटरी टीम का क्या रोल होता है? सेक्रेटरी टीम का हमेशा ये रोल होता है कि वो बोर्ड को सही गाइडेंस प्रोवाइड करे. बोर्ड के सेक्रेटरी के रूप में हम लोग हमेशा काम करते हैं जिसमें जितनी भी रेगुलेटरी बॉडी का कंपनी के ऊपर डायरेक्शन रहता है, चाहे वो आरबीआई हो, कंपनी लॉ हो, एमसीए हो, आरबीआई हो, सेबी हो, बीएसई हो, उन सभी के लॉज को फॉलो करवाने का काम सेक्रेटरी टीम का होता है. और किसी भी कंपनी के ग्रोथ में जितना रोल फाइनेंशियल अकाउंट्स का होता है उतना ही रोल एक सेक्रेटरी टीम का भी रहता है. कंपनी डे बाय डे ग्रोथ करती गई. 2020 में डेट लिस्ट करवाया बीएसई स्टेट पे, तो आज कंपनी डेट लिस्टेड है. और उसके साथ ही 2020 में एक ट्रेजेडी हुई कि कोविड-19 पैंडेमिक आया जिससे कोई अछूता नहीं रहा. कंपनी को भी उसमें काफी हर्ट हुआ है. और उस 2020 से 2022 की जर्नी कंपनी के लिए एक हार्डकोर ड्रीम बोल सकते हो, एक डरावना सपना बोल सकते हो जिसकी किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की थी. उन सभी से ऊपर उठते हुए हम आज आगे इस लॉन्चिंग सेरेमनी से, कर्टन रेजर से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि कंपनी अभी भी उसी ताकत के साथ, उसी सपने के साथ जीवित है और आगे अपना काम करना चाहती है. हम सब मिलकर निर्मल सर के उस सपने को आगे भी पूरा करेंगे. ये बात नो डाउट सबको पता है. जितने भी लोग एक्मे के साथ जुड़े हैं वो सभी सर को देख रहे हैं. सर की जर्नी में अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में सभी जने सर के साथ में रहे हैं और दिल से उन सभी का शुक्रिया जो आज भी सर के साथ खड़े हैं. और इसी के साथ मैं आज अनाउंसमेंट लेना चाहूंगा कि कंपनी अभी अगले ही कुछ महीनों में पब्लिकली होने जा रही है. हम लोग आईपीओ लॉन्च करने वाले हैं. 2023 में कंपनी एक पब्लिक इशू लेके आ रही है जिसमें कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो जाएंगे और कंपनी ये इंश्योर करेगी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स और एम्प्लॉइज जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी की वैल्यूज में इजाफा किया जाए और उन सभी के फ्यूचर को इंश्योर किया जाए और प्रोटेक्ट किया जाए. उसी के मार्गदर्शन में और उसी ड्रीम को लेते हुए अगर आगे हम चले तो ईसॉप
के रूप में कंपनी अपने सभी एम्प्लॉइज को ESOP देने का भी एक वादा करती है, जो अगले कुछ महीनों में अनाउंस किया जाएगा। इसी के साथ मैं उन सभी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स और रेगुलेटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने कंपनी का इस टफ टाइम में बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू रौनक, व्हाट अ फैंटास्टिक अनाउंसमेंट। मुझे लगता है इस बारी मुझे आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि तालियां तो बनती हैं। आईपीओ तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमने काफी कुछ सही किया है, अगर कुछ गलतियां भी हुई है तो काफी कुछ सही भी हुआ है। इनफैक्ट मैं जितना इन सब लोगों को सुन रही हूँ और जो ये लोग कंपनी के बारे में डिटेल शेयर कर रहे हैं, इनकी अगर खुद की क्रेडिबिलिटी और बायो देखा जाए तो ये सब कम से कम 10 साल तक इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और कोई इरादा नहीं है निर्मल जी को या एक्मे फिनट्रेड को छोड़ के जाने का। और जब हम ये देखते हैं कि एम्प्लॉइज कंपनी के साथ ज्यादा सालों तक रहते हैं तो शायद हमें नंबर्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती व्हेन इट कम्स टू ट्रस्टिंग सच अ कंपनी, सच अ ब्रांड। कहते हैं ना, एक्मे है तो भरोसा है। तो इसी भरोसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं टू वेलकम आशीष जैन जी, द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टार हाउसिंग फाइनेंस, beloved son of late Dr. Mohanlal Nagda, who had partnered with Nirmal ji for last 30 years. Unfortunately, we lost him 3 years back. May I request Ashish ji to please take this spot and share his thoughts about today's historic event with us. Thank you. Thank you so much. Today is a very emotional day for me because I joined this August group as a friend of Mr. Nirmal Kumar Jain, MD, Akme Fintrade India Limited. Today, I can recollect of the last 25 years of working of Mr. Nirmal Kumar Jain, along with my late father, Dr. Mohanlal Nagda, who dreamed of turning this company since the beginning days into an institution, because they were looking, the company was started for the needs of the lower middle class, for the LIG, for the EWS people, and an objective of socio-economical to boost those people who are living in the suburban, semi-urban, and of course the rural areas. Today, I sit in the place of my late father, Dr. Mohanlal Nagda, and I am feeling very proud to sit in front near to these dignitaries. Myself, Ashish Jain, MD, Star Housing Finance Limited, which is a BSE listed company and which is into home finance, creating a mark today in the housing finance industry. What I can see, the transformation of Star Housing Finance from a family-driven to a professional-driven company. I believe when you think of those vision and mission that the company can achieve something with the help of corporate professionals and a better corporate governance, the company really can achieve something what you have dreamed for. Today is a day when we celebrate about Akme Fintrade India Limited, about launching of its IPO and the achievements and the hard working done by Mr. Nirmal Kumar Jain in his life. He has given his heart and soul to not just Akme, but the whole Akme group, specifically Akme Fintrade India Limited. He has done so much for this company and bringing upgraded life of so many people to in his areas, and whosoever has got in touch with him. I am really thankful to be with him. I have worked with more than a decade with Mr. Nirmal Kumar Jain, but as you saw, and as you see that there are different companies, there are different entities. So I look after Star Housing Finance Limited. I wish Mr. Nirmal Kumar Jain in all his future endeavors, and of course, launching of the new product Aasaan loans, which is powered by Akme Fintrade India Limited, which is a digital platform to provide loans and basic needs to those people who are living in the rural areas. Hereby, I want to mention a special name of Mr. Anil Sachidanand, who has transformed Star Housing Finance Limited in his association as a mentor of last 2.5, 3 years. I appreciate and I really wish that what Mr. Sachidanand is doing for Akme Fintrade India Limited is unremarkable. Thank you so much for giving me this opportunity to speak. Thank you. Thank you so much Ashish for sharing your views. And now is the time that we all have been waiting for. IPO तो अभी round the corner. तो जब मैंने निर्मल जी से पूछा कि मंजिल कहाँ,
तो वो बोले कि मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो चलने का इरादा किया है, कभी ना हारूंगा हिम्मत उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं अपने आप से वादा किया है। और इस वादे पर दृढ़ उतर के जब वो इस मंजिल की तरफ बढ़े तो अकेले नहीं बढ़े, हम सबको साथ लेके बढ़े। और जितना हम ये लोन्स और ये फंड्स और इस सपोर्ट को हमारे इंटीरियर्स तक लेके जा सकते हैं, उतना हम इंस्पिरेशन क्रिएट कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए और एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं जो शायद हमारे जाने के काफी सालों बाद तक इस कंट्री की कंट्रीब्यूशन में एड ऑन करते रहे। आप सबका इसमें सहयोग रहा है, तो मैं आपको एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने निर्मल जी के साथ जुड़कर इस सपने को सच किया है और अभी तो बस शुरुआत है। Nirmal ji is the founder director of the Akme Group, a first generation entrepreneur, a professional CA and cost accountant, having more than 2 decades of business experience in the field of finance. He is the chief architect of Akme Group and chairman of Akme Fintrade India Limited companies. But अगर आप ये जानते हैं तो आप निर्मल जी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि उनके बारे में काफी कुछ जानना बाकी है। So sit back and be ready to get inspired by a very inspiring story of the man himself. Put your hands together for Nirmal ji. आचार्य कुंतु सागर जी महाराज जिनके नाम पर ये कंपनी बनी है, उनके चरणों में शत शत नमन वंदन करते हुए मैं आप सभी शुभ चिंतकों का हृदय की असीम गहराई से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। अभी भी युक्ति ने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक में है तो भरोसा है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप सबका भरोसा है तो एक में, क्योंकि बिगैर भरोसे के कुछ नहीं हो सकता। और संघर्ष या उन्नति के सफर की हम जो बात कर रहे हैं, संघर्ष में जब हमारे कदम लड़खड़ाने लगे, थकने लगे, तो एक आपका भरोसा ही था, मोटिवेशन आपका था, एक साथ आपका था जिसने हमें उन्नति की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। बाकी लोगों ने, दुनिया ने सोचा रखा था कि कोरोना में हमारे संघर्ष को हमारे सफर का अंत मान लिया, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि मेरे उतार को देखकर मेरे किनारे घर बसाने वालों में समुद्र हूँ, लोग क्या हूँ। और ये अपने आप पे भरोसे की बात थी, क्योंकि कहते हैं कि जिसकी नीति अच्छी होती है उसकी नीति अच्छी होती है। तो इस सफर की बात करें, जो आज हमारे जीवन की सफर की बात करें, एक्मे के सफर की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा जन्म एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार में हुआ, जहाँ पर संपत्ति तो नहीं थी लेकिन धार्मिक संस्कार बहुत थे। और बचपन की बात करें तो मात्र 1.5 साल की उम्र में माता का साया मेरे सर से उठ गया। एक घटना में मेरे शरीर का अभिन्न अंग मेरे हाथ से जुदा हो गया, लेकिन कुदरत ने इतना कुछ छीना तो उसके साथ में मुझे दिया तो न हारने वाला, न थकने वाला एक जज्बा दिया, एक हौसला दिया। तो उसी के बल पे आज मैं इस विपरीत परिस्थितियों के बाद भी निकल कर इस मुकाम पर पहुंचा हूँ। और मैं उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सकारात्मक सोच वाले जीवन में कभी उदास नहीं होते, मजबूत हौसले वाले जीवन में कभी निराश नहीं होते, और दूध फटने का वही लोग गम किया करते हैं जो रसगुल्ले बनाने की कला नहीं जानते। और ये हम लोगों ने सीखा है जिंदगी के इतने 25 साल के अनुभव में। हम लोगों ने जो काम किया है, जो प्रेरणा से काम किया है, कि जब परिवार ने सोचा कि इसके हाथ में तकलीफ है, ये बिजनेस तो कर नहीं पाएगा, तो उससे अच्छे एजुकेशन के लिए इसको बॉम्बे भेज दिया, क्योंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा एक गांव में हुई, हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। तो मेरे ब्रदर ने सोचा कि सीए बनने के लिए इंग्लिश जानना जरूरी है, तो इसको बॉम्बे भेज देते हॉस्टल में। तो मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम स्कूल से किया, फिर सीए किया, फिर आईसीडब्ल्यू किया, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। लेकिन गुरुदेव जी के नाम से ये कंपनी हमने बनाई थी, जिनकी प्रेरणा से हमने कंपनी बनाई थी। 94-95 ऐसा फेज आया, वो समय एनबीएफसी का आरबीआई से रजिस्ट्रेशन लेना कोई जरूरी नहीं था। तो बहुत सारी फेक कंपनी मार्केट में आई, प्लांटेशन कंपनी मार्केट में आई। उन्होंने हमारे जैसे गांव के लोगों को, भोले वाले लोगों को, अनएजुकेटेड लोगों को टारगेट किया और ऐसी अट्रैक्टिव स्कीम लेके आए, 2 साल में डबल कर देंगे, 3 साल में डबल कर देंगे, और करोड़ सौ रुपीस ऐसे लोगों को लेके चले गए। तो एक तरफ जहाँ लोगों के पास पैसे रखने की सुरक्षित जगह नहीं थी,
दूसरी तरफ जो काम करना चाहते हैं, जो अपने बलबूते पर व्यवसाय करना चाहते हैं, लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, उनके पास बैंकिंग अवेलेबल नहीं था। तो गुरुदेव ने हमें कहा कि आप हो सकता है कि बॉम्बे में रह के इतनी अपॉर्चुनिटी आती है, व्यक्तिगत प्रोग्रेस तो बहुत कर लोगे, लेकिन आप अपनी सोसाइटी, अपने लोगों के लिए क्या करते हो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आपको यहाँ पर पैसे कम मिले, उन्नति कम मिले, लेकिन लोगों की दुआएं बहुत ज्यादा मिली। हमने एक ये सोशल इको ऑब्जेक्ट को लेके कि अपने गांव के लोगों के पैसे अपने लोगों के काम आए और वो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उनकी इनकम में वृद्धि हो, ऐसा कुछ काम करें। हम 5 प्रमोटर ने मिलकर एक्मे फिनट्रेड की स्थापना की और उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो भी प्रोडक्ट हम फाइनेंस करें, चाहे 2 व्हीलर करें, चाहे 4 व्हीलर करें, चाहे ऐसे भी लोन करें, उससे उस बंदे की इनकम में वृद्धि होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होनी चाहिए। चाहे हमने 2 व्हीलर फाइनेंस किया, वो भी किया तो एग्रीकल्चर लिस्ट को किया, बिल मेंटरशिप पे किया, लेबर क्लास पे किया, ताकि उनके में वृद्धि हो सकता है गांव में 50 रुपए लेबर मिलती है, लेकिन उस बाइक पे अगर 50 किलोमीटर दूर शहर में आता है उसको 300 रुपए मिलता है। और छोटे छोटे लोन से हम लोगों ने शुरुआत की और लोगों के दिल तक पहुंचे हम लोग, क्योंकि बाइक पे फाइनेंस करना मात्र 30,000 40,000 का, वो समाज के सबसे निचले तबके का बंदा होता है और वो आपसे जब जुड़ता है और अगर आपकी सर्विसेज से वो सेटिस्फाइड है तो वो उसके रेफरेंस से उसके मिलने वाले सभी आपसे जुड़ते हैं। और ये हमारे साथ में हुआ। हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया और जब 2 व्हीलर फंडिंग से स्टार्ट किया तो लोगों से जुड़ते गए, उनको विश्वास हमारे पर जमता गया, तो हम लोगों ने फिर 4 व्हीलर फाइनेंस किया। 4 व्हीलर के लिए और फिर मॉर्गेज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम लोगों ने बड़ी कंपनी से टाइप किया, बड़ी बड़ी बैंकों ने हमारे को डीएस अपॉइंट कर दिया। तो एक हो गया कि एक्मे में जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, चाहे किसी प्रकार का काम हो जाएगा, एक लोगों का विश्वास जमने लग गया। तो धीरे धीरे हमने भी अपनी कार्यशैली में हमारे एरिया ऑपरेशन में वृद्धि की। हमने राजस्थान को कवर करते हुए एमपी में गए, एमपी से गुजरात में गए, महाराष्ट्र में गए, उड़ीसा में गए, आज 5 स्टेट में काम कर रहे हैं। और एक्मे जो 95 में हम लोगों ने स्थापना की थी, उसके ग्रोथ पे हम नजर डालने लेंगे तो पाएंगे, जैसा कि पहले भी मेरे स्पीकर ने बताया था कि एक छोटे से शहर की कंपनी, जो उदयपुर जैसे छोटे से शहर जहाँ पे किसी बैंक का कोई हेड ऑफिस नहीं है, उस वहां से 33 लैंडरों से रिलेशनशिप स्टार्ट करना, 600 करोड़ रुपए लाना। और एक ये कि हम लोगों ने जैसा लोगों ने हमारे पर भरोसा किया वैसे हम लोगों ने हमारे लैंडर पर भरोसा दिखाया। और आज ये कि 600 करोड़ में से हमने 400 करोड़ रुपए चुका दिए, लेकिन ऐसी कोरोना जैसी परिस्थिति में भले हम लोगों ने लोगों के पैसे कम किए होंगे, हमने लोगों को माफ किए होंगे, हमने उनके सेटलमेंट किए होंगे उनकी स्थिति को देख के, लेकिन हमने किसी लैंडर को ऐसा नहीं बोला कि आप 1 रुपया कम ले लो, आप ब्याज कम कर दो, आप सेटलमेंट कर दो, नेगोशिएशन कर दो। नहीं, हमने कहा हमारे पे लोगों का विश्वास है, उस विश्वास पर हमेशा खरा उतरेंगे। और आज भी ये कि हम लोगों ने 400 करोड़ रुपए चुकाने के बाद भी मात्र 200 करोड़ रुपए बचे हैं, तो लोगों की स्थिति को समझा, लोगों के सुख दुख के साथी बन कर रहे हैं। ये स्थिति ऐसी बनी थी कि एक स्टेट लेके हम लोग 95 से लेके 2019 तक हम लोगों ने जो ग्रोथ की बात करें तो हम लोगों ने 300 स्क्वायर फीट से लेके हम लोगों ने 20,000 स्क्वायर फीट का एक्मे बिजनेस सेंटर पूरा बना दिया। हम लोगों ने जब 3 लोगों से काम किया तब 600 लोगों तक पहुंच गए। हम लोगों ने जहाँ 0 से स्टार्ट किया वो 540 करोड़ तक का एम खड़ा कर दिया। तो ये लोगों का सपोर्ट था, लोगों का विश्वास था, उन्होंने एक्मे में विश्वास जताया, हम भी उनकी ग्रोथ में उनके सुख दुख में साथी बनते गए। और कोरोना जैसा भी रौनक ने बताया कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कोरोना जैसी बीमारी आएगी जो हर क्षेत्र के हर वर्ग को प्रभावित करेगी, चाहे छोटे से छोटा ठेले वाला हो या बड़े से बड़ा इंडस्ट्री वाला हो, कोई उससे अछूता नहीं है। फर्स्ट कोरोना आया जिसमें लॉकडाउन लगा, लोगों का आर्थिक नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, लोगों ने कमाया नहीं लेकिन उनका नुकसान कुछ नहीं हुआ, जिसमें सरकार की ओर से आरबीआई की ओर से भी 6 महीने का मोरेट मिला। हम लोगों ने भी अपने कस्टमर को पास ऑन कर दिया 6 महीने आप किस्त मत भरो, आप आराम से रहो। लेकिन जब सेकंड कोरोना है जिसमें आप सबने हमने देखा कि हर आदमी त्रस्त था, छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़ा, उसका धंधा चौपट, उसकी वर्किंग कैपिटल खत्म हो गई और जान माल का इतना नुकसान हुआ कि हमारे ऑफिस के पीछे जहाँ शमशान है हमने कभी देखा नहीं, जलाने वालों की लाइन लगती, लोगों की लाइन लगी और इंसानियत खत्म हो गई। और जो लोग, और सबसे बड़ा कि कोरोना अब तक ये समझा जाता था कि कोरोना शहर की बीमारी है, पैसे वालों की बीमारी है। हमारे गांव में तो शुद्ध खाते हैं, शुद्ध पहनते हैं, हमारे को कोरोना हो ही नहीं सकता उससे। तो दिक्कत ये हुई कि दोनों टाइम जब कोरोना आया तो मार्च के महीने में आया, तो सेकंड कोरोना जो आया वो भी होली का त्योहार है, शहर में होली दीपावली मनाई जाती है और गांव में होली मनाई जाती है, और वो भी 10-10, 15-15 दिन तक मनाई जाती है। तो लोगों ने बिंदास होली का त्योहार मनाया कि कोरोना का हमारे को खौफ नहीं है। लेकिन जैसे होली का प्रोग्राम खत्म हुआ और जिस प्रकार से लोगों की कोरोना की लाइन लगी,
और जिस प्रकार गांव में कोई ट्रीटमेंट मिलता बात उसको सर्दी जुकाम समझ के लोगों ने ट्रीटमेंट लिया, और उसके बाद में जो त्रासदी हुई है वो अपन शब्दों में बयान नहीं कर सकते, क्योंकि हम खुद ने लोगों को झेला है। लोगों के अकाउंट में हम लोगों ने 2-3 करोड़ रुपए उनका हॉस्पिटल के अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफर किए ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट की हालत ये थी कि अगर उसको गांव से उदयपुर ट्रीटमेंट कराने लाया तो 4 लाख तक का बिल बन गया, अगर अहमदाबाद लेके गया तो 15 से 20 लाख तक का बिल बन गया। लोगों के धंधे चौपट हो गए, लिक्विडिटी चौपट हो गई, और ऐसे सब परिस्थितियों के बाद में भी सेकंड कोरोना काल में बैंकों की ओर से, आरबीआई की ओर से कोई मॉरेट नहीं दिया गया। हमारे ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर बनता है कि आपको टाइम भी अपना कमिटमेंट पूरा करना है, हम क्या कर सकते हैं। और एक तरफ जहाँ कस्टमर जिनको हम दिल से जुड़े हुए थे, जिनको रिलेशन बेस्ड हम लोगों ने बिजनेस किया, उसके सुख दुख के साथ ही रहते, तो एक तरफ ऊपर कमिटमेंट चुकाने का, दूसरी तरफ जिन कस्टमर को पढ़ने नहीं जानते, जिनका 22 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और जिनके ऐसा टफ टाइम है जिसमें अपने उनके साथ में हाथ से हाथ खड़ा रख के साथ में खड़ा रहने की आवश्यकता है। और एक मैं बात बता दूं, हमारी कंपनी को 500 करोड़ प्रोडक्ट करने के बाद सरफेसी राइट्स, जिसमें अंतर्गत हम चाहते तो किसी भी कस्टमर की उसकी प्रॉपर्टी नीलाम करके, उसकी दुकान नीलाम करके हम अपनी वसूली कर सकते थे, लेकिन ये हमारा उद्देश्य कभी रहा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पैसे कमाने के लिए बिजनेस नहीं किया, हम लोगों तो लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया था। और हमने ये सोचा कि हमारे को जो किस्तें चाहिए, लोगों की इनकम कैसे चाहिए, लोगों की प्रॉपर्टी नीलाम करके, उनके मकान नीलाम करके कैसे नहीं चाहिए। और हमारा ये उद्देश्य हम लोगों का रहा कि हम लोग जिन लोगों का 22 साल तक ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, और जो जिनका मन स्थिति अच्छी है लेकिन परिस्थिति खराब है, उन लोगों को वो टफ टाइम में उनका हाथ से हाथ पकड़ कर हमें उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। उस समय में हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए उनको रोड पे ले आए, क्योंकि फाइनेंसर वो होता है, फाइनेंसर चाहे तो मार भी सकता है, फाइनेंसर चाहे तो तार भी सकता है, लेकिन हम लोगों ने क्या इस परिस्थिति में भले हम हमारा रेपुटेशन दाव पे लगा लेंगे, हमारी इज्जत दाव पे लगा ले, हमने उनको टॉप अप लोन दिया, उनको एक किस्तें 2 किस्तें चुकाने में रियायत प्रदान की। हमने उनसे ये कहा कि आप अपना काम धंधा चालू कीजिए, आप कमाइए, आपकी कमाई में से हमारी किस्तें आएगी वो हम लेना चाहते हैं। क्योंकि फर्नीचर बनाने वाला था तो उसके पास लकड़ी लाने के पैसे नहीं थे, वो खुद बेरोजगार बैठा था, 3 साल में कारीगर बेरोजगार बैठा था, वेल्डिंग करने वाला था तो उसके बाद लोखंड लाने के पैसे नहीं थे। ऐसी परिस्थितियों में एक्मे को भले ऊपर से राहत नहीं मिली, लेकिन हमने हमारे कस्टमर के साथ कभी नाइंसाफी नहीं की, हमने उनका कठिन परिस्थितियों में हाथ पकड़ा, साथ दिया, और हमने उनको आगे बढ़ाने में हमेशा मदद की। और यही रीजन रहा कि हमने सोचा कि इतना प्रेशर हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे बैंकों से पैसा लिया हो चाहे एनबीएफसी से लिया, हम लोगों ने अपनी पर्सनल गारंटी दी है, तो कहने के लिए भले कॉर्पोरेट एंटिटी, लेकिन हमारे लिए जस्ट एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है, तो हम उसी हिसाब से काम करते गए। तो हमने सोचा कि 550 करोड़ का यूपी होगा, 200 करोड़ का होगा तो चलेगा, लेकिन हम अननेसेसरी लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तो विगत 2 साल का कोरोना का ये परिणाम रहा कि हमने जो हमारे 400 करोड़ की लायबिलिटी उसको 200 करोड़ से चुका दिया, हमारा एयूएम जो 550 था उसको 350 पे लिया है। लेकिन आज हम उस कंडीशन में आए हैं कि हम लोग संघर्ष से निकलकर वापस उन्नति की बात कर सकते हैं। तो आज जो ट्रांजिशन फेज देख रहे हैं आप, जो आसान लोन.com की बात करें, वो इसी का परिणाम है कि अब हम उन्नति की ओर बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपना संघर्ष काल देख लिया, हम वो स्थिति में पहुंचे, हमने अपने ऑब्लिगेशन, हमारी जो ड्यूटी थी, लाइबिलिटी थी, हम लोगों ने पूरी निष्ठा के साथ में चुकाई है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जितने भी लेंडर थे, चाहे आरबीआई हो चाहे लेंडर हो, उन सब ने हमारी परिस्थितियों को, हमारी नीति को देख के, हमारे कमिटमेंट को देख के, हमारे इंटेंशन को देख के हर पल हमारा साथ दिया। कि आज भले हमने आगे पीछे किया हो कभी, लेकिन उन्होंने हमेशा ये साथ दिया कि नहीं, आपका इंटेंशन अच्छा है, और जब तक जैन साहब है पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। और आज उनका विश्वास हमारे के साथ में खड़ा रहना, और यही रीजन है कि हम संघर्ष से निकलकर वापस उन्नति की ओर बढ़ा रहे हैं। और आज जो हम सोच रहे हैं, जो समय में पिछले 25 सालों में हम लोगों की जो कमियां रही है कि हम लोगों ने एक रिलेशन बेस्ड बिजनेस किया, लोगों का हर टाइम साथ दिया, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने हमारे रिलेशन का नाजायज फायदा भी उठाया। ये भी हम लोगों ने अनुभव किया, क्योंकि सब जगह बराबर टाइम दे रहे हैं, लेकिन एक्मे में इससे बराबर नहीं दे रहे। तो एक ये नया सोचने को मजबूर कर रहा है। हमारा इंटेंशन, हम हमारे उद्देश्य से भी भटके नहीं है, हम लोग लोगों की मदद नहीं करेंगे, जो तकलीफ में उनको हम लोग कम ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन एक तरीका सोचने का बदल दिया है कि हम लोग इस कंपनी को जो 25-26 साल से होगी, जो छोटे से शहर में है, लेकिन वो उसमें इतनी काबिलियत है कि वो बहुत बड़ा आगे बढ़ के काम कर सकते हैं। और जैसा हमने स्टार हाउसिंग फाइनेंस में देखा, जो हम लोगों ने इश्यू लेके आए एसएमई प्लेटफॉर्म पर, उसको लिस्टेड कराया, जो शेयर हमने 30 रुपए में दिया था, उसके बाद में बोनस देने के बाद उसकी कॉस्ट 15 रुपए होगी, आज वो
150 रुपए चल रहा है। और ये इसके लिए हुआ कि हम लोगों ने प्रोफेशनल टीम को हमारे साथ में जोड़ा। एक आर्थिक इन्वेस्टमेंट कंपनी जो हमारे अदिति सचिदानंद है, उनके मेंटर और कोच के माध्यम से जो काम कर रही है और जो प्रोफेशनल टीम के साथ में काम कर रही है, जिन्होंने जब से हमने उनका साथ लिया है तब से कंपनी ने दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति की है। और जो 67 का हमारा 67 करोड़ का पोर्टफोलियो था वो आज 125 करोड़ क्रॉस कर गया। और जो शेयर का प्राइस है आप सब देख रहे हो, किसी ने छिपा नहीं। और उसका फायदा हम सब लोगों ने उठाया, हमारे एरिया के लोगों ने। वो टाइम हम लोगों ने उनके सामने जाके बोला था कि आप डिपोजिट मत रहिए, कंपनी के पार्टनर बनिए, कंपनी के मेन स्ट्रीम में आइए। हम लोगों को जाके जबरदस्ती शेयर दिए, तो उसका नतीजा हुआ कि किसी की शादी हुई, किसी के घर बन गए। जो शेयर हम लोगों ने 15 रुपए में दिया, आज 150 रुपए चल रहा है। और कंपनी सबको साथ में लेके आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन हमने अपनी कमियों को ध्यान में रखते हुए कुछ जरूरी सुधार करने की जो चेष्टा की है। हम चाहते हैं कि अगर उसमें सुधार कर ले, हमारी पॉलिसी में थोड़ा सुधार कर दे, तो निश्चित तौर से कंपनी में वो काबिलियत है कि हम बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। और सबको साथ में लेकर, एम्प्लॉयों को साथ में लेकर, हमारे जो शुभचिंतक है उनको साथ में लेकर बहुत आगे ग्रोथ कर सकते हैं। उसके लिए हमने सोचा कि फैमिली बेस्ड जो बिजनेस का एक मुकुटा लगा हुआ है, उसको फैमिली बेस से निकाल कर प्रोफेशनली गवर्नमेंट कंपनी बनाए। उसके लिए हमने एक एक्सपीरियंस, और जिनको 2-2 साल क्रिकेट का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, उनके लिए हमने हमारे बॉबी सिंह चंदल को सीईओ अपॉइंट किया है। हमारे एक्स चेयरमैन एसपी श्रीवाली जी जो आरएनजीबी के चेयरमैन है, एक डायनेमिक पर्सनालिटी, उनको हमने डायरेक्टर अपॉइंट किया है। और ये जहाँ भी परिवर्तन की जरूरत है, हम एक पॉजिटिव सोच के साथ में परिवर्तन ला रहे हैं। एक रिलेशन बेस्ड बिजनेस का, उसको हम लोग पॉलिसी बेस्ड बिजनेस लाना चाहते हैं, और जो पॉलिसी में फिट होता है उसी का काम हो। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने रजनी टेलर को सीईओ अपॉइंट किया है। और एक मैन ड्रिवन जो हमारी कंपनी अभी तक चल रही थी, हम चाहते हैं वो सिस्टम ड्रिवन हो, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। उसके लिए हमने राजेंद्र जी सावंत को, इसका उनका साथ ले रहे हैं हम लोग। और उसके साथ में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो बात करते हैं, उसके लिए हमारे जुटावत जी हैं, उसका साथ ले रहे हैं हम लोग। रौनक जुटावत है, हम सबके साथ में बहुत लंबे समय से साथ चल रहे हैं, उनका भी साथ ले रहे हैं। और ये जहाँ भी परिवर्तन की जरूरत होती है हम कर रहे हैं। निश्चित रूप से कंपनी को आगे बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, और इसका लाभ सबको मिले। हम चाहते हैं कि हमारे जो शुभ चिंतक है, जो इतने समय से इस संघर्ष में भी हमारे साथ में रहे, वो भी इस कंपनी के जो ग्रोथ प्लान आगे का, जो भविष्य का हमारा, जैसे रौनक ने बताया था, तो हम चाहते हैं कि जैसा स्टार में हम लोगों ने लोगों को जोड़ा, उनकी इनकम में, उनकी वेल्थ में जो वृद्धि की है, वैसे ही जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, जिन्होंने हर समय हमारा साथ दिया, उन लोगों को एक्मे फिनट्रेड में भी जोड़ा IPO के माध्यम से। और उन लोगों को, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, और ये सोच पे हम लोग काम कर रहे हैं, अभी तक काम किया और आगे भी करते रहेंगे। और इसी के लिए हम एक IPO के जब लोगों ने प्लान किया है, सब्जेक्ट टू सभी अप्रूवल्स और गवर्नेंस हम लोग उसको लेके आएंगे, और सभी लोगों को कंपनी से जुड़कर कंपनी की वृद्धि में सहभागी बनने का, कंपनी की सफलता का टेस्ट रखने का हम लोग लेके आ रहे हैं। और हम चाहते हैं हमारे एम्प्लॉय, जैसा अभी युक्ति ने बताया कि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से लोगों ने अपना खून पसीना कंपनी के लिए लगा दिया, लेकिन आज भी हर परिस्थिति में कंपनी के साथ में, उन लोगों को भी हमेशा परमानेंट साथ रखने के लिए ईसोप स्कीम लेके आ रहे हैं। ईसोप के माध्यम से हम भी चाहते हैं कि कंपनी की वृद्धि में उनकी भी वृद्धि हो, और उनको भी हम परमानेंट उनके साथ में रख सकें। और आज के शुभ अवसर पर मैं आप सबको एक ही बात करता हूँ कि आपने जिस भरोसा एक्मे पे किया है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको वायदा करता हूँ कि आपके भरोसे पे हमेशा खरा उतरूंगा। और जो उन्नति की ओर अभी ने कदम बढ़ा है, निश्चित तौर से कंपनी आने वाले समय में बहुत नए रूप में आपको दिखाई देगी। और एक्मे फिनट्रेड ही है, आसान लोन.com के माध्यम से लोग कंफ्यूज करते हैं कि नई कंपनी है। आसान लोन जस्ट ब्रांडिंग है कंपनी की, एक्मे फिनट्रेड है, और वही डायरेक्टर है, निर्मल जी वही है, कोई चेंज होने वाला नहीं है। कोई आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो तो निकाल दो। बहुत सारे लोग कहते हैं आसान लोन का बोर्ड लग गया तो कंपनी बिक गई, ऐसी कोई कंपनी नहीं बिकी है। आसान लोन हमारा ब्रांड है, और हम पूरी आर्फिन और उनकी टीम के साथ में जुड़ के, और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो आशीर्वाद इनका मिला है और जो मार्गदर्शन और जो इन्होंने दिया है, निश्चित तौर से हम आने वाला समय अपना होगा। और जैसा युक्ति ने कहा, मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो परिंदे ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान बाकी है, जीती है सिर्फ चंद पहाड़ियां, अभी तो खुला आसमान बाकी है। और हम निश्चित तौर से इस समय मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा उन शख्सियतों का, उन लोगों का जिन्होंने कंपनी के हर समय कंपनी का साथ दिया, और कंपनी के हाथ से हाथ मिलाकर खड़े रहे, और कंपनी की उन्नति उनके जीवन का लक्ष्य बन जाए। मुझे ऐसा लगता है। मैं इस समय सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सभी 33 लैंडर्स का, जिन्होंने
विपरीत परिस्थितियों में भी कभी कंपनी को परेशान नहीं किया। जितना नियमानुसार उनसे हो सकता है उतना सपोर्ट उन्होंने किया। आरबीआई एक रेगुलेटर होते हुए भी हमारी परिस्थितियों को समझा, उन्होंने हमेशा हमारा सपोर्ट किया। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा गोनन जी वे जो स्टार लिस्टिंग के समय से हमारे से जुड़े थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप है, एक जाना पहचाना फाइनेंस इंडस्ट्री में, किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन जो भी करते हैं निस्वार्थ भाव से करते हैं और हमेशा चिंतन एक ही रहता है कि कंपनी को आगे बढ़ाएं। ऐसे गुरुनाथ जी भाई का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा और ये चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद स्नेह प्रेम हमेशा बना रहे। और अनिल जी, सच्चिदानंद और उनकी पूरी आरपीपी टीम, मेरे पास कहने को कुछ शब्द नहीं है। ऐसे विपरीत माहौल में भी जब अपनों ने अपना साथ छोड़ा था, लेकिन उन्होंने मालूम नहीं कौन सी जन्म का किस क्या रिश्ता है मेरे को पता नहीं, लेकिन उन्होंने उस समय आकर मेरा हाथ पकड़कर कहा कि पूरी आरपीपी टीम आपके साथ में है, बिल्कुल आप टेंशन नहीं करें निर्मल जी, हमने पता है कि आपकी नीयत अच्छी है, मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी की रेपुटेशन दाव पे लगा रहा हूँ, तो इसके लिए लगा रहा हूँ कि आपकी नीयत अच्छी है और आप करना चाहते हो। मैंने कहीं से कंप्लेंट नहीं की निर्मल जी की नीयत खराब है। तो मैं अनिल जी का भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सही व्यक्ति की पहचान कर उनके साथ में टफ टाइम में न सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरे लोग जो जितने मेरे लिए जुड़े हुए मेरे साथ में, उनके ग्रोथ के लिए, उनकी प्रगति के लिए उनका साथ मुझे मिला है, पूरा आर्थिक टीम का मिला है। और मेरा स्टाफ जो 25 साल से मेरे साथ में है, तो उन्होंने हर पल कभी भी, हो सकता है कभी मैंने सैलरी महीने पर नहीं भी दी हो संघर्ष के टाइम पे, लेकिन उन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा सर आप है तो विश्वास है, आप अपना काम कीजिए और हमारे से जो भी बन सकता है हम आपके लिए करने के तैयार हो। जब ऐसा समर्पित स्टाफ हो, अनिल जी जैसे समर्पित लोग हो, गुणा भाई जैसे लोग हो, ऐसे बैंकर हो, तो निश्चित तौर से हमारी सफलता को कोई नहीं रख सकता। लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं यही कहूँगा कि मेरा फैमिली का इस टाइम में जो सपोर्ट मुझे रहा है, फैमिली कहते हैं कि फादर एंड मदर आई लव यू, लेकिन ना तो मेरे फादर एंड मदर है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ भाई और भाभी आई लव यू, क्योंकि उनका जो समर्पण मेरे प्रति रहा है, जो उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, हर टाइम एक कि निर्मल को आगे बढ़ाना, निर्मल की समस्या से निजात दिलानी है। और मैं पूरी फैमिली जो एकजुट होकर मेरे साथ में खड़ी रही है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और अंत में आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित देते हुए एक ही कहूंगा कि यूं तो गिरकर हम खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन मिल जाए साथ आपका तो हम दुनिया बदल सकते हैं, हम दुनिया बदल सकते हैं। और निश्चित तौर से आपका प्रेम मोहब्बत और इसी प्रकार जो विश्वास भरोसा बना रहा, तो आने वाला समय हमारा होगा, एक्मे का होगा, हम सबका होगा। धन्यवाद। कुछ मौके ऐसे होते हैं जिनमें तालियां बजाने तक का भी अवेयरनेस नहीं रह पाता, हम सुन रह जाते हैं, क्योंकि ये कहानी एक दिल से बयान की गई है और एक बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी से जी गई है। तो ये इवेंट शुरू करने से पहले जब मैं अपनी रिसर्च कर रही थी एक्मे फिंट्रेड, तो उनकी एनुअल रिपोर्ट में मेरी नजर पड़ी। और नॉर्मली एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ ग्रोथ और परसेंटेजेस का जिक्र होता है। इस एनुअल रिपोर्ट में ट्रस्ट की बात हो रही है, ईमानदारी की बात हो रही है, जिम्मेदारी की बात हो रही है, लीडिंग विद रिस्पांसिबिलिटी। और जिस कंपनी के गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऐसे हैं, उस कंपनी पे भरोसा करना कोई मुश्किल बात नहीं। जैसे निर्मल जी ने बोला, वो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ। ट्रस्ट उन्हें किया जा सकता है जो अंधेरों में ना छोड़े आपका हाथ। एंड ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की है एक्मे फिंट्रेड ने, जिसका नाम अब बदल के Aasaan.com रख दिया है, लेकिन as he said, the spirit and the soul of the company is still the same. ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक इमोशनल मोमेंट भी है और हमारे पास थोड़ा बहुत समय भी है, तो मैं थोड़ा लिबर्टी लेना चाहूंगी और निर्मल जी से कुछ और बातें करके थोड़ा कुछ और सीखना चाहूंगी, क्योंकि ये मौका शायद बाद में मिले ना मिले। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान भी है, रिलीजियस भी है, और हमारी सोसाइटी में अक्सर माना जाता है कि या तो आप अच्छे इंसान बन सकते हैं या अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि जब अच्छाई से काम करने चाहते हैं तो लोग आपका फायदा उठाते हैं और आप ज्यादा लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस बात को बिल्कुल रिफ्यूट कर दिया, he's totally gone against the tide to prove that you actually have to be a good person to run a great business. So I want to learn from you and understand from you, Nirmal ji, कि spirituality का आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है और spirituality की वजह से कैसे आप बिजनेस को और ग्रो कर पाए।
स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मैं सोचता हूँ कि धर्म एक जीने का तरीका होता है जो हमें किस प्रकार से हम अपने जीवन को संतुष्ट होकर जी सकते हैं, वही धर्म है। अगर धर्म आपको संतोष दे सकता है और तो और सेटिस्फेक्शन दे सकता है तो आप सबसे पहले बड़ा होता है। और हर धर्म ये सिखाता है कि आप किस प्रकार दूसरों की मदद करें, दूसरों को आगे बढ़ा दें, क्योंकि कर भला तो हो भला। कहते दूसरों का भला करोगे तो आपका ऑटोमेटिक भला होगा। और कहते हैं कि लाभ और सुख, आप शुभ करोगे तो लाभ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये स्थिति हम लोगों ने, कहते हैं कि मंदिर में आप 10-15 मिनट जाते हो और वहाँ धर्म का चूल्हा पहन के जो काम करते हो, लेकिन जो आप जीवंत अवस्था में जब आपके 10 घंटे जो ऑफिस में गुजारते हो, चेयर पे बैठ के गुजारते हो, उसमें आपका लोगों के प्रति नजरिया क्या है, आपके मन में करुणा कितनी है। आज हम जो ऑफिस में बैठते हैं, जब ऐसे बंदे आते हैं 40,000 का लोन लेते हैं, तो समाज के सबसे निचले तबके के बंदे हैं। अगर उसकी परिस्थिति ऐसी बनती है, उन परिस्थितियों में आप उनके प्रति क्या रूप अपनाते हैं। और एक्मे का हमेशा रहा है कि किस्मत अगर खराब है तो एक्मे हमेशा उनके साथ में है, और जिसकी नीयत खराब होती है तो उसके एक्मे हमेशा कभी माफ नहीं करती। और ऐसे लोगों के लिए जिनकी किस्मत खराब होती है, शायद पूरा लोन भी माफ करना पड़े, हमने किया है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम लोग ने एक्मे चैरिटेबल ट्रस्ट भी चला रखा है। एक रिलीजियस के लिए गांव के प्रति भी सोचते हैं कि आज भी गांव में लड़कियों को पढ़ाते हैं सेफ्टी पर्पस से, कि उनको आगे शहर में ना रखेंगे, उसके लिए हम लोगों ने एक्मे गर्ल्स कॉलेज खोला है, वहाँ पे लड़कियों को रहने के पैसे भी दिए। बहुत सारे हम लोग ग्रोसरी चलाते हैं, बहुत सारे स्कूलों को गोद ले रखे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को मुफ्त हमारे यहाँ से पेंशन जाती है, विधवा पेंशन जाती है। तो ऐसे बहुत सारे सोशल कॉज हम लोग रिलीजियसली करते हैं, और उनका एक ही इंटेंशन है कि इंसान को किया जाए काम तो फल देता है, और उन्हीं भावनाओं के साथ हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग विद अस कि हम आप लोगों के सपोर्ट की वजह से क्या क्या सब कर पा रहे हैं और सोसाइटी को कैसे सपोर्ट कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग सो मेनी थिंग्स एंड सपोर्टिंग फ्रॉम योर हार्ट so that we all as a country can come together and become a developed country, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सपना है। एंड आई एम श्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे बिजनेसमैन की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से ही शायद हम उस लेवल तक पहुंच पाएंगे। So thank you so much once again. As I said, picture अभी बाकी है। हमारा फ्यूचर, हमारी ग्रोथ, हमारा प्लान क्या है, ये सब आपके साथ शेयर करना भी बाकी है। But before we go ahead, may I please invite Guna to share a few words with us. Good evening all. नमस्ते निर्मल जी, अनिल जी, कल्पेश भाई, बॉबी सिंह और बाकी सब लोगों को। So I have been knowing निर्मल जी and जो अभी मोहन जी नागदा जो अभी नहीं रहे, so I know them from 2017 and I know them when the team was doing well, then they were doing super well, and then we had ILFS, we had COVID, the whole industry took a beating. But एक अच्छा बात ये रहा कि निर्मल जी has always been a fighter. कम वॉट में ये भी शाहरुख खान के फैन है लगते हैं, सबको एक ही है कि मैं हूं ना, तो कभी वो कोई चीज को मना नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं है और मैं हूं ना ये बोल के जिंदगी यहाँ तक निकाल दिए। तो इट हैज बीन अ वंडरफुल फॉर an entrepreneur not to leave the field when the chips are down and fight on. ये निर्मल जी सीख सकते हैं। To be honest, he has undergone a very, very, very tough situation, and with God's grace and because of his good karmas which he has created, and being a good philanthropy, God-fearing guy, he has bounced back. And I have no hesitation in accepting today. At some point of time, even I had my own doubts whether he can pull it back, and today he has done. तो ये जो बंदा जो खराब टाइम में अच्छा कर दिया है, तो अच्छे टाइम में तो बहुत अच्छा करेगा। तो वक्त इसका अभी है, इनका वक्त अभी आ गया है। I feel Acme has got a bright future. The worst is behind them. यहाँ से सब ऊपर ही जाना है, and they will create value to the shareholders, to the stakeholders, to the employees, and I will be missing one big thing. Without ArcFin's support, I believe team ArcFin with Anil ji,
leading it, has been a major contributor in scripting this turnaround. And I wish and pray the team continues to guide them and take this to new heights. And I congratulate them in advance for their forthcoming IPO. I am very sure that this IPO will be getting good response, and they will be delivering multi-bagger returns to the shareholders, just like what they did in Star Housing. Thank you. Sorry, I got a bad throat. I can't continue more. Thank you. So much. Thank you, Gaurav ji, for sharing your views. जैसे बोलते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तो I'm sure इसी अच्छी संगति में हम सबके साथ भी अच्छा ही होगा, और आपका साथ है तो और भी अच्छा होगा. Thank you so much for your blessings and for sharing your thoughts with us today. Let me now invite SP Jain Srimali ji, SP Srimali ji, sorry, to share his views with us. म्यूट कर ऐसे चाहिए Am I audible now? Yes. Okay. मैं SP श्रीमाली एक्स चेयरमैन राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक 2014 to 2019 और निर्मल जी के साथ काम करने का मौका मिला. मुझे वो एक स्थिति याद है जब इनका एक फंक्शन था जिसमें ये अफोर्डेबल को लॉन्च कर रहे थे, और मेरे अभिन्न मित्र भी है ये एक तरीके से. उस समय शायद 1 या 1.5 मिनट का ही टाइम लगा था जब मैंने 450 इनके अफोर्डेबल के फ्लैट्स की फंडिंग को बैंक से अप्रूव कर दिया था. 1 मिनट या 1.5 मिनट. मेरे ख्याल में ये वर्ल्ड बैंक रिकॉर्ड होगा कि इतने कम समय के अंदर किसी प्रोजेक्ट को पूरा का पूरा एक चेयरमैन स्टेज के ऊपर कर दे, और उसका कारण केवल और केवल निर्मल जी की नीयत, निर्मल जी का व्यवहार और निर्मल जी का लाइजन. निर्मल जी के लिए केवल 2 लाइन कहूंगा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही लाइन उतार करके रखी है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. जब भी उदयपुर की विजिट होती थी तो शायद ही कोई ऐसी विजिट होती थी जिसमें निर्मल जी को देखे बिना हम लोग जा सके या मिले बिना जा सके. एक तरीके से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता था जब हम 2 आपस में बातचीत किया करते थे. निर्मल जी का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था जिसमें RMGB ने उसको अप्रूव ना किया हो, और विद इन फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स और सेकंड्स. तो मैं इनकी आगे की आने वाली स्कीम के लिए सफलता की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और IPO ग्रैंड सक्सेसफुल रहे. और निर्मल जी जैसे आदमी की हार हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिसने लगाई छलांग थी वे खंदकों के पार थे, जो सोचने में रह गए वो सोचते ही रह गए. तो निर्मल जी छलांग लगाने में विश्वास करते हैं, और ये फिर जो छलांग लगाई है, ईश्वर हमेशा नेक व्यक्ति का साथ देता है. जिसकी नीयत में बरकत है उसके घर में बरकत है, उसकी बैंक में बरकत है. एक्मे इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चलता रहा है. बहुत बहुत धन्यवाद. अधिक समय नहीं लूंगा. निर्मल जी और उनकी टीम दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. आई थिंक ये बिल्कुल दिल से आवाज निकली, क्योंकि बिल्कुल दिल को छू गई. सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. एंड मैं एक्चुअली ऑनेस्टली काफी टाइम से यही सोच रही हूँ कि 25 सालों में इतना सब कैसे पॉसिबल हो सकता है. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि शायद इनको थोड़ा समय मिले और एक आध किताब लिख डालें, जिसको पढ़ के हमें सीखने को मिले कि एक लाइफ टाइम में 0 से इस लेवल तक कैसे पहुंच सकते हैं. बट काफी लोगों का साथ रहा है, काफी लोगों की ब्लेसिंग्स रही है, जिसके बिना ये शायद पॉसिबल नहीं था. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आलोक हरलकर के वीडियो बाइट की, शायद वो हमारे साथ जुड़ नहीं पाए आज, बट आलोक जी का भी एक मैसेज है हमारे लिए. वो हमारे IPO पार्टनर हैं, और मैं सुनना चाहूंगी कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं हमसे आज. सर Good evening, everyone. I am sorry that I could not be available like today as I am traveling. So I am addressing you all through a small video message. Let me start by my small introduction.
My name is Alok Harlalka and I'm managing director of my company named Latest Corporation Limited. We are a category 1 cibil registered merchant banker and a BSc assimilation company. We met Nirmalji a month back for meeting him and his team. I was curious and excited to work with them. All credit goes to Nirmalji for starting Akme Fintrade with the vision of helping people from a small town and to visit the team of many small enterprises across the state of Rajasthan. Not many people achieve the success that Mr. Nirmalji has achieved throughout his journey. And it's my pleasure that we are associated with the entire team of Akme for their main good IPO. We are preparing full board and very soon we will be filing. We are achieving SEBI and exchanges. We are targeting to list the company within March 2023. In this journey, we are happy that Akme Group have mentors like Mr. Anil and Mr. Kundra who have been mentoring the company. I wish Nirmalji all the success and will pray to God and support him to fulfill his dream of pushing the small enterprises across the state of Rajasthan and country. Thank you. Good evening, everyone. I am sorry that I. Thank you, Alokji. You absolutely made your presence felt with this amazing video message. Thank you so much for sharing this message with us today. Let me now invite Mr. Abhijit from Unitas Capital to share his views with us. I think he's joined us virtually on Zoom. Hi, good afternoon, everyone. It's a privilege to see you all. I know there are 200 plus participants, and what a evening to be in front of you. I had have the privilege of knowing many of you, but to give a bit of quick background, I'm one of the founders of Unitas Capital, which is India's #1 boutique investment bank, which raises capital for impactful businesses like Acme, what Nirmalji is running. And also I run an NBFC called UC Inclusive Credit, which is which is basically lending to early stage businesses in India. My association with Mr. Nirmalji is over the last 3 years, and what a privilege it has been to know him. When I first, I don't go for due diligence visits because I have a very good team which does all this work. But what happened was when it was a question of Nirmalji, I heard so much about him that I thought, "Kyun nahi? Ek baar to jana chahiye, banta hai." So, and I think I came out as one of the most happiest persons after meeting him. The passion, the commitment, the focus, and the junoon, जिसे आप लोग बोल रहे थे अभी, the junoon to build an institution was there, and that's what made me to think, yes, this is one partner I would like to definitely partner with. And I think, see, every business goes through ups and downs. It is nothing, unusual. And I think the COVID didn't help many of us. All of us are running businesses, so we know it went through a phase. And I think Acme did went through some challenges, but we had a huge faith in Nirmalji and his team's ability and their passion to build this institution. I think one of the most important part, what I felt, and I think I should highlight that, is his approach to creating employment for the people who need it the most. I don't know, many of you may or may not know this. When I spent time, I did a bit of homework to understand what type of person he is, what are the things he has done, including, learning about his parents as well, especially his father, and how he has built things on the ground. So I think the legacy of coming from such an amazing background of parent and then continuing that, providing employment for people, women and all who come from the villages, don't get the opportunity, train them rightly. And I was so surprised when I visited the HO to see that women are working there. So many women are working there. I think in a place like Udaipur, where from which he operates, it's a mid-sized town, and to see so many women getting employed in an institution like us talks of how much of diversity he wants to build in, how much of focus he is on providing employment to the people, obviously the right people, train them and build a career for them. So one side, the institution grows. Two is if you have such a diversified workforce, it helps you to, really build a very strong institution, because ideas from different quarters helps you to run an institution well. And what I have seen is, he had the intent, he had the right intent. And initially, obviously, he's built multiple businesses, but now he knows that it's very important to focus and be very clear about what is the next stage of life he wants to take the institution to. I'm pretty sure this IPO would be a super success. And I'm sure the way the team is working towards it would make this an amazing institution. I have no doubt about it. I think it's the sheer passion, commitment, dedication, and the focus of an institution and its founders
which make the institutions great. I think Nirmalji epitomizes all these things, having come from from seeing things on the ground in villages, and then the way he has built each and every institution speaks very high of his commitment and passion to build this. Yes, it has come through a slightly difficult phase, but definitely the brighter days are ahead. I'm pretty sure the institution will do amazingly well in the days to come. And I wish each and everyone there supporting this institution and in future will support, that they are probably backing the right institution. Thank you. Without intervention, and I think Nirmalji understood that very early on in his business, and that is why he chose to be in this space, so that he can provide the resources, the support required for people to become financially independent and raise their हिस्सा बन चुके हैं. Thank you so much for staying with us. I would like to request Mr. G.K. Jain to please share his thoughts with us. Let me take the opportunity to also thank Mr. Abhijit once again. Sir, आपने जिस point को highlight किया वो काफी time से मेरे ज़हन कि हम अगर लोगों की मदद करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो self sustainable हो सके, self sufficient हो सके. As they say, never offer anyone a fish, instead teach them fishing so that they can support themselves. And thank you for bringing that point out, not only in your own endeavor but also in what Nirmalji is trying to put together. So thank you once again, sir. And on that note, may I please welcome Mr. G.K. Jain to share his experience of being a strong supporter of Akme Fintrade. प्रॉब्लम है उसका नेट. संजय I think there is a bit of a network issue at his end. So we're waiting to see if that gets sorted. In the meantime, may I please request Mr. Sanjay Agarwal from Ambit to share his experience of being with us at Akme Fintrade. Thank you. My name is Sanjay Agarwal, and I hope everybody can hear me now.
Yes. So my name is Sanjay Agrawal. I am CEO of Bombay-based Ambit Finance, which is leading NBFC lending to SMEs. And fortunately, I belongs to the same area of Udaipur, and I am also sharing a similar qualification, chartered accountancy with Nirmalji, and therefore I can have a good similarities. And sometimes I feel that he has been pioneer. I have visited Akme office 3-4 years back, and then I was completely surprised because in '92 when we qualified as CA, at that point in time, thinking about floating one NBFC, which is finance company of his own, we all were thinking that how we will get job. So we were just thinking and applying jobs here and there. And Nirmalji has floated his own company, and that too in an area which was not yet developed fully and was not conducive for doing business of financing. And he has grown that business from his own resources to a level where one can say now he is one of the medium-sized NBFC. And after taking the kind of vision he has done for I feel that he has done a lot of social service, and my respect has gone up for Nirmalji and his team, Anilji, and rest of the guys who have met in Udaipur. And I also take an inspiration that why can't we do this? And then we decided to expand in those locations in Udaipur and surrounding areas. And from Bombay, we started venturing into smaller places, and now we have 60 branches. So the point which I'm trying to say, he is visionary, and he has here in '92 he has taken those kind of measures which very, very difficult to even envisage. And he has mobilized the capital, 100 crore rupees, not very small amount, over a period of time, though it has been mobilized over a period of time, but he must have won the confidence of many people. He must have done something correct, and therefore he's reached to that level. A professional reaching to that level is not easy. If you are having heritage money, or if you have got silver spoon, I can understand. But if you are coming out yourself, and therefore I feel that Aasaan.com is also part of his vision, and he will be in a position to take this to the new height. Taking into account the past experience with Nirmalji, that his values are always remain intact. Whatever it comes, he has seen difficult time in the last 3-4 years due to COVID. A lot of repayments got affected, and because of that, there was some issues in collection. But he has tried his best to overcome the situation. He has been coming and going to Bombay in this age. He's doing everything possible to his control to ensure that the company remains floating. And now, with the right issue, the company has become once again a very good company and has decided to go for IPO. And I think with taking into account the current trend in the market, where fintech is the buzzword, venturing into this area will result in heavy dividends. So I wish all the best to the Akme team, which is now Aasaan.com, and I hope and pray that IPO will be fully subscribed, oversubscribed, and you will give multi-bagger returns to your investors. That's all. Thank you. Sanjay ji, jai ho. So be it. So be it. So be it. So be it. Thank you, Sanjay ji, for all your blessings. And I think if we look closely at Nirmal ji's story, it comes out very clearly कि बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच जरूरी है, और बड़ी सोच को सार्थक करने के लिए बड़ा पर्पस बहुत जरूरी है. तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं as a coach that कैसे बड़ा सोचा जाए, how do I think big? And the only answer that comes to my mind to that is have a bigger purpose. Because when you have a bigger purpose which is beyond you, then you find ways to think big and make it happen. Just as how Nirmal ji has done it in one lifetime. और हम सब अकेले कुछ नहीं कर पाते, हम सबको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है.
तो एक नाम जो आपने शायद बहुत सुना है आज के इवेंट में, निर्मल जी से भी सुना है, वो है उनके खुद के मेंटर और कोच अनिल जी। एंड आई थिंक मैं ऑलरेडी उनकी ऑलमोस्ट फैन बन चुकी हूँ, क्योंकि इतनी सारी बातें मैंने उनके बारे में सुन ली हैं, और बाकी शायद चाय पे चर्चा होगी आफ्टर दिस इवेंट। बट मे आई रिक्वेस्ट निर्मल जी हिमसेल्फ टू प्लीज इंट्रोड्यूस अनिल जी टू अस ऑल। युक्ति ने बहुत अच्छी बात बोली कि बड़ा बनने के लिए बड़ी सोच जरूर होती है, लेकिन बड़ी सोच को अपने अंदर डालने के लिए बड़े व्यक्तित्व की जरूरत होती है। और ऐसे व्यक्तित्व जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनका इंडस्ट्री में का बहुत बड़ा नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे दिल वाले इंसान है, जो हर परिस्थिति को भागते हुए जो काम करते हैं, साथ में एक से एक मतलब 11 बनने का प्रयास करते हैं। हमने अभी 3 साल पहले अनिल से जब संपर्क हुआ, जब हमने एक्मे फाइनेंस में एक छोटी सी कंपनी थी, एक विजन के साथ हमने उसको कराया था, एसएमई लिस्टेड कराया था। लेकिन ये था कि उसको कुछ प्रोफेशनल की जरूरत है, उस कंपनी को क्षमता होते हुए नहीं ऊंचाई देने के लिए। तो गुणा भाई ने अनिल से हमारा परिचय कराया, तो हमने सर से कहा कि अनिल जी आप आइए। और अनिल जी ने में वो जादू है। मैं कहता हूँ जीवन में वही लोग कम बोलते हैं जो जीवा से तो कम बोलते हैं, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। और ऐसे हुनर से बोलने वाले अनिल जी हैं, जो मास्टर ऑफ स्ट्रेटेजी अगर मैं जिसको कहूँगा, क्या जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप जो भी सेटअप देख रहे हो, तो उसके पीछे किसी व्यक्तित्व की सोच है, वो है। उनका हर समय ये रहता है कि हम कैसे करें, कैसे परिस्थिति को बाहर निकले, कैसे आगे बढ़ा। पहले आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात तो निस्वार्थ बात करते हैं। अपने खुद का आज तक मैंने कभी इतनी बार बात की, कभी अपने बारे में नहीं सोचते कि मेरे को ऐसा करना, मेरे नहीं, मैं ड्रीम को करना और आप आगे निकलो। पहले आप निकलो बाहर, उसके बाद में बात करूंगी। तो ऐसा व्यक्तित्व है, जादू व्यक्तित्व है, किसी परिचय के मोहताज नहीं, फाइनेंस इंडस्ट्री में जिसका अपना नाम है और जिनका जादू हमने देखा है, अपने स्टार में हमने देखा है। ये जो छोटी सी कंपनी को आप नेशनल लेवल की बना के बीएससी से एनएससी पर हम जाने वाले हैं। और आज जो जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिस प्रकार कंपनी की ग्रोथ हो रही है, और अनिल जी ने जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में एक्मे फिनट्रेड में, मैं तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए ऐसी परिस्थिति में अपने रेपुटेशन दांव पे लगाना। किसी व्यक्ति के लिए इतना करना बहुत बिरले व्यक्ति जरूर कर पाते हैं, जिन्होंने एक ठान ली मन में कि नहीं, मुझे स्टार्ट की तरह एक्मे को बाहर निकाल कर नई ऊंचाई को ले जाना है। निर्मल जी ने हमेशा अच्छी नियत के साथ में उदयपुर लेवल में बहुत बड़ा काम किया, लेकिन वो चीज जो चाहिए वो नहीं मिल पाई, तो वो मुझे करना है। तो पूरे आखिरी टीम अनिल जी के नेतृत्व में जो लगी हुई है, और जो निस्वार्थ भाव से जो जादुई अंदाज में काम करते हैं, मैं चाहूंगा संपूर्ण सदन जोरदार तालियों से अनिल जी का सम्मान करते हुए मैं चाहूंगा अनिल जी अपनी बात अपने सकते। Thank you, Nirmal ji, or very good evening to all of you. I don't know which way to start, how to start, given that the gentleman sitting next to me has spoken about something from his heart and soul. He spoke about something which he believes in it for last 25 years, and for all of us who come from a world which is largely a commercial world, and a world which we understand has salaries and bonuses and incentives and ESOPs. Here is a gentleman who spent 25 years in the industry, and in the end of 25 years, he's doing his own balance sheet, trying to understand where he is and trying to relate his objectives and trying to place himself in the entire ecosystem. The way I looked at it when I met him 3 years back, and it's been a long journey of 3 years. In the last 3 years, the way I looked at him was a very simple and a very honest approach towards what he's trying to do. And when I looked at him, I guess it was the height of his crisis that he was going through. And honestly, during that crisis, what was most important is the composure on which he was leading himself with. He was or he is also in SMAs with banks and institutions. And to stand next to him and to be next to him, to the people who are around him, to his founding team, to the employees of Fintrade, and to the group members of Fintrade, to stand next to him was the first thing that we witnessed. We saw all of them standing next to him during this crisis time. We saw all of them participating with him during this crisis time. While there were wagging tongues talking about him, while there were things being spoken about him, because successes are many fathers. When we have small ups and downs, we tend to see things going other way.
And I guess in Nirmal, we all see things going other way. So we as Artfin, and Artfin is nothing but a group of people who have spent many years in industry. And thank you, Abhijit, thank you, Sanjay. You all understand as Form 16 how difficult it is to grow through our ecosystem in the industry. So Artfin is nothing but a group of people who join together, have a mission and a vision to set up our domain into the industry. And one of the domain that we all as Artfin team understand is to build businesses, build P&L and build balance sheet. And that's where I guess we thought we will support first Star Housing, where we have economic interest. And then with Nirmal, it has, let me clear the rider that there is no economic interest as we speak today. It is more of an act of Nirmal and me and the Artfin team who joined together along with all my colleagues, whether it is Mr. Prashant Karulkar or Mr. Gaurav Dubey, who is part of, or Mr. Sunil Devdas, or anyone from Akme who was part of my team, who part of the group that we thought that we should support Nirmal in this endeavor. Interestingly, we were always had the courage to do it, but the element of support that we got from Gunwant Ved was something which, and his entire lot of people, whether it is Ajay, Amit ji, Shikhar ji, and so many other people who gave us an unsolicited support in making this happen. So as we drive through the journey of last 3 years, we realized that SMA 1, SMA 2 are all technical in nature. What is more important is the intent. And that is what we decided to become part of Nirmal ji, and we continue to be in the journey of being part of Nirmal ji and the Akme family. Obviously, the role of Ashish Jain, Nagda family is also very important because he runs Star Housing, which is a listed company, and we have an economic interest in Star Housing, and it is reasonably doing well. The journey is still to go. It's just the beginning of a journey that has just started in that space, rural housing space, and I'm sure under the leadership of Ashish, of Kalpesh Dave, Natesh Narayanan, CFO, and Mr. Anup Saxena, that company will also see the light. The investors are starting to see the smile in that company. So it took us 3 years. It took us a small baby step. It took us the management and board smaller steps to take decisive actions. And those decisive actions, when turned into deliverables, started to give result. And we believe that if you continue to work on sound governance, if you continue to work on good governance, in the end it becomes a habit, and as the habit grows, you slowly, steadily try to build the businesses for a sound P&L and balance sheet. And that's what Star is now aiming to deliver under its board of directors. Then we got into understand Nirmal and Nirmal's business, and that is where we today are kind of waiting to complete the Shraddh Paksh and then come out, because all of us by religion we believe that we got to do good things when the time permits, and we believe that in Nirmal ji he's regained the conviction and confidence back. In Nirmal's team, they got the conviction and confidence back. In Bobby Singh Chandel, who joined the group, has the chief executive officer. I guess Nirmal has got a strong shoulder. Obviously, Sardar ji है, strong है. Physically be strong है, mentally be strong है. तो कुछ ना कुछ तो वो करके दिखाएगा. तो in that he got someone who could become part of him and take on, because in any journey of ups and downs, you have many tongues that wax, and some tongues were wagging about Nirmal ji and Bobby taking the stand of participating in building a P&L and balance sheet. I guess is one of the professional stand that will go a long way in case it goes well, and it should go well if the intents are good. And when it goes well, I'm sure he will get a lot of applause in his journey of rebuilding and recreating Fintrade, which will now operate under the brand Aasaan. So I guess it's a very important step to get a chief executive officer of a company who will put all the governance and board in place to ensure that the company is progressing to its ultimate objective under the vision and objectives of the company. It is also very important to get a CFO by name Rajni Gehlot, and she has been part of ecosystem for last decade or so. But it's also important that the same CFO changes the color and become a professional CFO. It's not that Rajni doesn't understand the importance of a CFO, and I guess with Bobby
and the professional team and engaging with bankers like Abhijit, Sanjay, and many other people who are Darshana ji. I guess many of them are on this call. When she engages with the conversation, she understands what it will take to make this company an institution, this company an enterprise, this company a name to reckon with, and that's what I guess Rajni has transformed herself with. And I guess in Nirmal she sees that leader who can possibly help guide this company into the next level of vision that they're building. In young company secretary, they have someone who understand it both from the secretarial practices, from the sound governance, and from the compliance perspective. In the gentleman's name by name Ronak, and certainly in both Ashish and Kavish as two brothers who have been part of late Mohanlal ji's son, they understand that the benefit they have reaped has a part of the journey when they were they became part of Star Housing. So overall, this is a 36 months of journey. This is a journey in which काफी कुछ समझ में आई लोगों को, काफी कुछ हमें भी समझ में आई, और कुछ बहुत सारे लोग जुड़े, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स काम नहीं आए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स बहुत काम आए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स में सिनर्जीज मिले, कुछ एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़े फेलियर्स हुए. But clearly I guess the friends who are on this call and those friends who are who will hear about this call later on will certainly believe in one thing, that निर्मल जी के साथ लोग इसलिए जुड़े बिकॉज वो एक नेक इंसान है. पहली चीज. दूसरी चीज, उन्होंने अभी तक जितने रीपेमेंट्स किए हैं, जितने भी फंडिंग्स लिए, उनके रीपेमेंट्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ द बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग और नॉन इंस्टीट्यूशनल फंडिंग. Well, there are still whatever little I understand from my little due diligence that I have done, that it is still a long journey of ensuring a rebrand building. But I think in the family of Nirmal, whether it is Keshulal ji or whether it is Hiralal ji, I think they are all currently are coming under one banner with this next generation, Nilesh, Suresh and Arvind and Deepesh. Deepesh ji, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको rebuild करें, and that is what, when we started seeing the rebuilding process, we thought that we should build a strategy around creating an ecosystem that will be sustainable for long-term good governance of this company. And that is what the change started from having a board which will be independent, which will be governed, and which will have more powers in terms of taking decisions. It is important that when as a professionals, me, Abhijit or Sanjay ji, Nirmal ji को जाके बोल सकते हैं कि भाई ये सब कर लो, लेकिन करने वाले तो निर्मल जी है, because he owns majority share and he is the one who has to take the decision to do it. And I think when he comes out in public forums and make an announcement that I am not going professional, I am not going to take all the decisions with transparency and put everything on black and white, I think that's the first step that he's taking towards the change, and that is the change that helps us to think about a long-term vision. And in that long-term vision, I guess his well-wishers and our well-wishers like Gunwant Bhai, Amit ji, Ajay ji, lot of many other people who participated, Saurabh Bhatia ji, lot of other people who participated, Shikhar ji who participated in this, have now given us the strength to think that this company can be looked at from taking it to the public. And that is what the intent is now. That is what the objective is now. And that is what the philosophy is now. And that is what the team's vision is now. We have created a war room. We have created a war room in Udaipur and Mumbai to take upon the process of taking this company to IPO. And we have under the leadership of Mr. Nirmal and under the leadership of Mr. Gunwant Ved and the entire team, with Greatex team who is going to be the lead arranger and the banker to this IPO, and subject to all approvals of board and regulatory authorities. I guess the whole purpose is to start the work. Whole purpose is to take the blessing. Whole purpose and objective is to take the well-wishers of all of you who are on this call and who could not attend this call for their own exigencies, to see how we can take this company from being a small company in Udaipur to a national level company, to an enterprise or an institution in making as we go along. And that's what I guess the entire
team of the professional team under Mr. Bobby Singh Chandel is currently in a way trying to take a small baby step. I should sincerely appreciate Mr. Alok and Naveen, who are part of the IPO partnership arrangement, who are going to take up all the approval process and start preparing the red herring prospectus in the days to come. I should genuinely appreciate the efforts of the activities that is happening at the pre-IPO stages. I should genuinely appreciate the board and the members of the team who are directly or indirectly coming in the way of this company. Technically, when we look at this company, it is well poised for reasons that it has already a listed NCD, and in many ways it forms many of the governing norms of a listing company. It has been a profit making company for last many years, and it actually qualifies many of the norms of IPO. So to that extent, I guess it becomes extremely pleasing for all of us together as a well-wisher, as mentors, as coach, as participants. कुछ लोग जो औहदे में बैठे हैं, कुछ लोग जो positions में बैठे हैं इस कंपनी के, कि उनको एक विजन मिले, उनको एक डायरेक्शन मिले, उनको एक ऑब्जेक्टिव मिले कि वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का एक पर्पस मिले, and that is what this balance sheet now provides. This balance sheet now provides solution for many a situation that could come in the process. But most important thing before we could take any step is the sound governance and good governance. And I think that comes from the board and Nirmalji himself, and that is where it begins. And that is where I guess the beginning of this entire journey is. And if the entire organization is trying to build itself in a way which is completely risk with a strong risk framework, then my belief and many of the people who runs balance sheet and P&L believe that we will be able to have a sustainable and successful growth that one could see in the days to come. We think if all goes well, by mid of February, the announcement of IPO should happen. We also believe that if all goes well, by March, the bell should ring. And we also believe that if all goes well, these are dates which are tentative in nature, which has many disclaimers, and these are not by any chance a drive to state a non-fact. It is more to state a fact that this company intend to do it with subject to all approvals in place, and build respective channels to get all the approvals in place, and that's the intent that we carry. I guess there are two aspects of things that my friends here have tried sharing from the time that we started. One is the transformation of Fintrade from a company which was a conventional franchise model company to a digital Aasaan loan branded company, and in that we expect all the franchise dealers, all the existing employees, associates, well-wishers to be with Mr. Bobby Singh in making this dream come true. As the CEO of this company, we look forward in Mr. Bobby Singh to ensure that he builds the right risk framework and business framework to ensure to build Aasaan loan into a synonymous name in the Indian financial services market. So that's one thing that we are looking forward through this announcement. The second thing that we are looking forward to this announcement is to let people at large understand that Mr. Nirmalji, quote unquote, when he speaks from his soul, and there is a lot of truth in what he's trying to speak. He might have difficulty owing to certain technical reasons, but I guess with people around and with certain right steps he takes and right steps that people around him takes, he will be able to kind of generate the synergies of governance and synergies of right governance and right business model that can give him the result. He realized in his conversation and in his experience that perhaps too much of relationship also spoils, and that is something that he has to understand, and he has to ensure that Bobby Singh manages a business under strong standard operating procedures. Equally, what we wanted to express before we conclude this call today was to also share that company is looking forward towards an initial public offering. And in this initial public offering, we wanted your love, affection, and your brand as a brand ambassador stand strong with this company and Nirmalji. And this is what our intent was when we came out
to talk to all of you through this medium of electronic channel. We have always enjoyed interacting with all the family members of Akme Group. We have always enjoyed interacting with the lenders of Akme Group and Star Housing Group. Clearly, the way we might be seen as a common people between Star and Fintrade. Our interest is we have an economic interest as Akme. We have an economic interest in Star, and we continue to build that economic interest and continue to progress around that economic interest. Our interest in Fintrade is largely to ensure that our domain has RPs that we carry and comes into the foray of Fintrade, and Fintrade takes the step and stage of becoming an institution, and that's the stage on which we currently operate. And we currently look at Mr. Nirmal Jain with a very clear message, and I'm sure all my colleagues and guests from the banking and non-banking will agree with me that the success from here on will come only and only if he leads the journey of sound and good governance. And with this, I conclude. I wish Nirmal ji and the family of Akme Group, Fintrade Group, all the very best in the journey of creating a company to an institution. All the very best. Over to you, Ruti. Thank you. Thank you so much. I think we were still just kind of putting all those thoughts together. Very well articulated vision. Thank you so much, Anilji. You absolutely spoke as a mentor, and there is absolutely no doubt left in the fact that we are headed in the right direction. आज vote of thanks से पहले एक point आपके साथ share करना चाहूँगी, observation कि इस event में काफी चीजें अलग हुई. For example, काफी लोगों का video on है. Normally Zoom events में सिर्फ black screens दिखने को मिलती हैं. So thank you very much once again for putting your video on, for really being here with us during the event. And the second most interesting thing is कि जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे event से पहले, उतने ही हमारे साथ अभी भी हैं. And third and last is that हमने slotted designated time से पहले event conclude कर दिया है somehow. Otherwise, it normally gets stretched. So I think you're doing very well on time. Thank you so much for your patience. There is a lot that still needs to be said, and for that we will keep meeting. Let me hand it over to Bobby Singh himself. Let him share a vote of thanks with you all. Thank you, Yuki, and I think it's time to come to conclude. समय जिसे कहते हैं पूरा होने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा सबका एक तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ जो इस Zoom के कॉल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ में रूबरू हुए, जिनके साथ हम अपने विचार शेयर कर पाए, और उन सब लोगों का भी मैं शुक्रगुजार करना चाहूँगा जो निर्मल जी के साथ हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग शोल्डर लेकर खड़े हुए, जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे साथ में बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ना चाह रहे हैं. मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, उन सारे एम्प्लॉइज का, सारे टीम मेंबर्स का, उन सारे आपके स्टार हाउसिंग फाइनेंस जिन्होंने अपने काम के अलावा, जरूरी नहीं है कि ये उनके पार्ट का, ये उनका रोल है, बट उन्होंने अपने रोल से आगे बढ़कर हमारे लिए जो किया है, हर इवेंट में उनका पूरा सहयोग रहा है. वो अगर ये वो नहीं होती तो शायद हम उतना सक्सेसफुल नहीं कर पाते. तो उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम, स्टार हाउसिंग टीम एंड निर्मल जी का और पूरे परिवार का, एक्मे परिवार का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया साथ में जुड़ के आगे बढ़ने का, काम करने का. एंड देन स्पेशल थैंक्स टू the crew here, special thanks to Prashant Karupta ji, जिन्होंने which made this happen, allowed us to use the crew, the team, the equipments, and his supporting and blessings towards making this happen, even a successful event. And Ajay, who's been since yesterday been running helter skelter to make this happen, the person behind the camera who's basically helping us ensure that we move well. All the crew members, thank you all, thank you very much, and सबको नमस्कार, शब्बा खैर. आपके सहयोग का आगे से पूरा सहयोग चाहते हैं, आपसे हम पूरा सपोर्ट चाहते हैं. And
Thank you thanks a lot to UP for converting this event into a nice storytelling and nice making this event a very successful. Thanks a lot for your time and being with us here. Thank you all. Namaskar. Sabak hai.